फिल्म है जो कार्तिक वर्मा दाड़ू द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। फिल्म का निर्माण BVSN प्रसाद और सुकुमार ने क्रमश श्री वेंकटेश्वर सिने चित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से किया था। इसमें साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील, राजीव कनकला, ब्रह्माजी अजय और रवि कृष्ण प्राथमिक भूमिकाओं में हैं। विरूपाक्ष 21 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था और आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। कथानक 1979 में वेंकटचलपति को रुद्रवनम गांव में अपने घर में काला जादू करते हुए देखा जाता है, लेकिन एक क्रोधित भीड़ उनके घर में घुस जाती है, जहां वह उन पर उनके गांव में बच्चों की हाल ही में हुई रहस्यमयी मौतों का आरोप लगाते हैं और उन्हें जलाकर मार डालते हैं। छलपति की पत्नी पूरे गांव को कहते हुए श्राप देती है कि 12वें वर्ष में गांव नष्ट हो जाएगा। छलपति के बेटे भैरव को बाद में ग्रामीणों द्वारा एक अनाथालय में भर्ती कराया गया। सूर्य 12 साल बाद यानी 1991 में अपनी मां और दोस्त के साथ एक उत्सव में शामिल होने के लिए अपने गांव रुद्रवनम लौटता है। हालांकि मंदिर में एक ग्रामीण की मौत के बाद गांव में तालाबंदी की स्थिति है और शराब का डर है। गांव का पुजारी 8 दिन का तालाबंदी करता है, जहां किसी को भी गांव में नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि वह गांव के हैं। सूर्य और उनका गांव एक दशक से अधिक समय से गांव में नहीं रहते थे, जहां उन्हें सूर्यास्त से पहले अन्य आगंतुकों के साथ जाने के लिए कहा जाता था। सूर्या ने छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में वापस लौट आया क्योंकि वह नंदिनी के लिए गिर गया जब उसे एक आपात स्थिति के दौरान उसे इंजेक्शन देना पड़ा। नंदिनी ने अपना लटकन देकर समय पर मदद के लिए उनका धन्यवाद किया। चूँकि अनुष्ठान पूरा हो गया है, इसलिए सूर्य को गांव में वापस रहना पड़ता है। उस रात सुधा ने लॉकडाउन नियमों को तोड़ने और अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने का फैसला किया। लेकिन सुधा से बात करते समय कुमार को एक आने वाली ट्रेन से मार दिया जाता है। जो दुर्घटना को देखती है वह चौंक जाती है, जहां वह एक मधुमक्खी के छत्ते में चली जाती है और मधुमक्खियों द्वारा काट ली जाती है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता है, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और चेन रिएक्शन में और लोगों की मौत होने लगती है। सूर्य शराब की जांच शुरू करता है और वेंकटचलपति और उसकी पत्नी के अतीत के बारे में सीखता है। इस बीच ग्रामीणों ने अभिशाप को उठाने के लिए अपना खून देकर नंदिनी की बलि देने का फैसला किया। सूर्य को पता चलता है
सूर्य को कि भैरव वास्तव में जीवित है और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। सूर्य बताता है कि वह 8 घंटे के भीतर मंत्र से छुटकारा पाने और नंदिनी को बचाने का तरीका खोज लेगा। इसीलिए वह समाधान की तलाश में गांव छोड़ देता है। एक घोड़ा की मदद से सूर्य उस गुफा तक पता लगता है जहाँ जादू डाला गया है और वह पता चला है कि कुमार वास्तव में भैरव है और गांव में उसका गुप्त साथी जादू के साथ उसकी मदद कर रहा था। गांव लौटने के बाद सूर्य को पता चलता है कि अपना खून देकर पूरे गांव पर कब्जा कर लिया गया है। अपनी विशिक्षित अवस्था में ग्रामीण एक जलते हुए पेड़ की ओर चलने लगते हैं जो वास्तव में वही पेड़ है जिस पर जलपति और उसकी पत्नी को बांधकर जलाकर मार डाला गया था। सूर्य को पता चलता है कि नंदिनी भैरव की गुप्त साथी है और उसका सामना करती है। नंदिनी ने खुलासा किया कि उसके माता पिता निर्दोष थे और उसके पिता एक अथर्ववेद अभ्यासी ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल बीमारियों और शराबों से लड़ने के लिए किया था। इसीलिए वह अवस्था में ग्रामीण एक जलते हुए पेड़ की ओर चलने लगते हैं जो वास्तव में वही पेड़ है जिस पर जलपति और उसकी पत्नी को बांधकर जलाकर मार डाला गया था। सूर्य को पता चलता है कि नंदिनी भैरव की गुप्त साथी है और उसका सामना करती है। नंदिनी ने खुलासा किया कि उसके माता पिता निर्दोष थे और उसके पिता एक अथर्ववेद अभ्यासी ने अपने ज्ञान के इस्तेमाल बीमारियों और शापों से लड़ने के लिए किया था, जिसे ग्रामीणों ने उन्माद में दुष्ट प्रथाओं के गलत समझा और उसे मार डाला गया। नंदिनी ने सूर्य को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसके माता पिता की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। सूर्य नहीं चाहता है और गांव की रक्षा के लिए नंदिनी से लड़ने का फैसला करता है। नंदिनी सूर्य पर हमला करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास उसकी लटकन है जिसकी जादुई शक्तियाँ उसकी अपनी शक्तियों के खिलाफ ढाल का काम करती है। कोई और रास्ता ना देखकर नंदिनी ने आंसू बहाते हुए सूर्य से उसे मारने के लिए कहा, जिससे वह सहमत हो गया और उसे मार डाला। इस प्रकार मृत्यु की पीड़ा समाप्त हो गई। नंदिनी का अंतिम संस्कार करते समय सूर्य ग्रामीणों से अनुरोध करता है कि वह बुरी प्रथाओं के बारे में अपनी वर्ज न छोड़ दें। वह अपने हाथ में नंदिनी के लटकन को देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। बाहरी ऑडियो आइकन यूट्यूब पर ऑडियो यूकबॉक्स फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक B.S. गणेश लोकनाथ द्वारा रचित है। पहला गाना नाचो वेले 24 मार्च 2023 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा गाना कल्लो 17 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था। मुक्त करना फिल्म को 21 अप्रैल 2023 को तेलुगु में एक नाटकीय रिलीज़ किया गया था। फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः नेटफ्लिक्स और स्टार माँ द्वारा
अधिग्रहित किए गए थे। यह फिल्म 5 मई 2023 को हिंदी और तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ हुई थी। कन्नड़ डब संस्करण 12 मई 2023 को रिलीज़ होने वाला है। स्वागत विरूपाक्ष को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। दी हिंदू की संगीता देवी डंडू ने कार्तिक वर्मा डंडू की कहानी और काम की प्रशंसा की। उन्होंने श्री गेंदर तेलंगाला, नवीन नोली और श्याम दत्त सेनुद्दीन द्वारा किए गए प्रोडक्शन डिज़ाइन, संपादन और सिनेमेटोग्राफी की भी प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के रघु बंदी ने भी मुख्य अभिनेताओं, विशेष रूप से संयुक्ता मेनन के प्रदर्शन के साथ कार्तिक वर्मा दाड़ू द्वारा लिखित निर्देशन और कहानी की प्रशंसा की। टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा, विरूपाक्ष एक अच्छी तरह से तैयार की गई फिल्म है, इस तरह की जो आपको अभिनेताओं से भरे पात्रों को देखने पर मजबूर करती है, क्योंकि फिल्म में घुटन भरा माहौल है जो आपको अपनी ओर खींचेगा। 123 तेलुगु ने 5 में 3.5 स्टार दिए और लिखा, विरूपाक्ष एक आकर्षक रहस्यमय थ्रिलर है जो तकनीकी मूल्यों पर उच्च है। एक अच्छी कहानी, अभिनेताओं द्वारा सराहनीय प्रदर्शन प्लस पाउंडिंग ध्वनि प्रभाव और साफ सुथरा निर्देशन इसके ट्रम्प कार्ड है। थोड़ा छोड़कर धीमी दूसरी छमाही, यह फिल्म अपने अविश्वसनीय तकनीकी मूल्यों के लिए एक नाटकीय अनुभव की हकदार है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, हालांकि फिल्म का चरमोत्कर्ष कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और दूसरों को नहीं। फिल्म अंधविश्वासों पर केंद्रित है जिसे देश में कुछ लोग अभी भी मानते हैं यह होना चाहिए। विचार के लिए भोजन, कुल मिलाकर फिल्म एक अच्छी मनोरंजक करती है। दी हंस इंडिया ने लिखा है कि कहानी, पटकथा, ध्वनि डिज़ाइन और मुख्य अभिनेताओं का प्रदर्शन फिल्म के प्रमुख सकारात्मक पहलू है। पंजा साई धर्मदेश, जन्म 15 अक्टूबर 1986, एक भारतीय अभिनेता है जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू कोनडेला परिवार से संबंधित, उन्होंने बॉक्स ऑफिस की सफलता पिल्ला नोवु लेनी जीवितम 2014 के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिम्हा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला। अपनी शुरुआत के बाद तेज सुब्रमण्यम, फॉर सेल 2015 और सुप्रीम 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद एक के बाद एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक असफलताएं आई। इसके बाद
तेज ने सफल फिल्मों चित्तर लहरी 2019 और प्रतिरोजू पंडगे 2019 दोनों के साथ खुद को स्थापित किया। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में सोलो ब्रेथुके, सो बेटर 2020, रिपब्लिक 2021 और विरूपक्ष 2023 शामिल है। प्रारंभिक जीवन पृष्ठभूमि। साई धर्म तेज का जन्म 15 अक्टूबर 1986 को प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता राजनेता चिरंजीवी की बहन विजया दुर्गा के घर हुआ था। तेज ने अपनी स्कूली शिक्षा चेट्टीनाड विश्वविद्याश्रम चेन्नई और नालंदा स्कूल हैदराबाद में की और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सेंट मैरी कॉलेज हैदराबाद से अभिनेता अल्लू अर्जुन, राम चरण, अल्लू शिरीष, वरुण तेज और निहारिका कोनिडेला तेज के चचेरे भाई और उनके छोटे भाई वैष्णव तेज भी एक अभिनेता हैं। पवन कल्याण और नागेंद्र बाबू उनके मामा हैं। करियर पदार्पण और प्रारंभिक कार्य 2014 से 16। तेज ने 2014 में रेजिना कैसेंड्रा के साथ फिल्म पिल्ला नुव्वु लेनी जीवितम से अपनी शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, साई धर्म तेज का देहाती आकर्षण उनके कार्यों को विश्वसनीय बनाता है। अभिनेता विशेष रूप से अपने डांस मूव्स से काफ़ी प्रभावशाली है। जबकि डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा, साई धर्म तेज एक परिपक्व प्रदर्शन देता है। वह अपने प्रदर्शन से पूरी फिल्म का मनोरंजन करता है और उसने इसे काफ़ी आराम से किया है। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू तेलुगु के लिए सिम्हा अवार्ड मिला। 2015 में तेज की 2 रिलीज हुई। उनकी पहली फिल्म रे थी, जिसमें उन्होंने श्यामी खैर के साथ रॉक का किरदार निभाया था। 123 तेलुगु ने कहा, साई धर्म तेज का विद्युतीय प्रदर्शन इस फिल्म की प्रमुख संपत्ति है। 2015 में तेज की दूसरी रिलीज सुब्रमण्यम फॉर सेल थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 33.95 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। उन्होंने रोजीना कैसेंड्रा के साथ दूसरी बार पिल्ला नुव्वु लेनी जीवितम 2014 के बाद अभिनय किया। हालांकि विभिन्न आलोचकों ने इसे नियमित कहा। तेज के प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन के रूप में अद्भुत किया गया। सहज और आश्चर्यजनक पुनरुत्थान और अन्य कार्य 2016 से 2018। तेज की एक्शन कॉमेडी सुप्रीम, जो अगले वर्ष रिलीज हुई, आर्थिक रूप से भी सफल रही और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। सुप्रीम के बाद तेज ने थिक्का 2016, विनर 2017,
जवान 2017, इंटेलिजेंट 2018 और तेज 2018। सेहत 5 फिल्मों में अभिनय किया। अपनी फिल्मों में समान और नियमित कहानियों के चयन के लिए भी तेज की आलोचना की गई थी। सफलता और हालिया कार्य 2019 से वर्तमान। चित्रलहरी 2019 पहली रिलीज थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसमें समीक्षकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की थी और तेज ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म में विजय के किरदार को तेज के अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ बताया था। फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में डेक्कन क्रॉनिकल ने बताया कि साई तेज ने वजन बढ़ाया है और दाढ़ी के साथ ताज़ा दिखता है और चरित्र में फिट बैठता है। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपनी सामूहिक छवि को पूरी तरह से अलग कर दिया है। वर्ष की उनकी अगली फिल्म प्रतिरोजू पंडगे भी सफल रही। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुरली कृष्णा CH फिल्म की अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा है कि फिल्म निश्चित रूप से साई तेज का कैनवास है और वह अपने मानक चॉप्स को तड़क भड़क के साथ पेश करते हैं। बाद में 2020 में उनकी फिल्म सोलो ब्रेथ के सो बेटर को कोविड-19 महामारी के बाद रिलीज़ किया गया। सिनेमाघरों में 50% व्यस्तता के प्रतिबंध के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आइडल ब्रेन KGB सराहना की विशेष रूप से उनकी कॉमेडी टाइमिंग और फिल्म के भावनात्मक दृश्यों में अभिनय। इसके विपरीत द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि तेज को एक बेहतर स्क्रिप्ट से फ़ायदा हो सकता था। देवा कट्टा द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म रिपब्लिक 2021 में तेज ने एक IAS अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म, जो एक राजनीतिक नाटक है, सकारात्मक समीक्षाओं के साथ खुली। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को परिपक्व कहा और फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और हिट बन गई। तेलंगाना टुडे के प्रकाश पेचेती ने कहा, गणतंत्र निश्चित रूप से साई धर्म तेज के पंख में एक टोपी जोड़ता है। तेज की अगली फिल्म विरूपाक्ष है, जो भाम भोलेनाथ फेम कार्तिक वर्मा दुआंडू द्वारा निर्देशित एक सामाजिक फंतासी थ्रिलर है। उन्होंने कर्मक्ष नवोदित जयंत पंगुगंती और संपत नंदी के साथ एक फिल्म के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं। निजी जीवन
सितंबर 2021 में देश हैदराबाद में दुर्गम चेरुवु ब्रिज के पास एक वाहन मोटरसाइकिल दुर्घटना में था। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने घोषणा की थी कि उन्हें नरम उतर्क की चोटें और कॉलर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वह खतरे से बाहर है। मीडिया छवि। निर्देशित एक सामाजिक फंतासी थ्रिलर है। उन्होंने कर्मक्ष, नवोदित जयंती पंगुगंती और संपत नंदी के साथ एक फिल्म के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं। निजी जीवन। सितंबर 2021 में तेज हैदराबाद में दुर्गम चेरुवु ब्रिज के पास एक वाहन मोटरसाइकिल दुर्घटना में था। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने घोषणा की कि उन्हें नरम उत्तरक की चोटें और कॉलर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। मीडिया छवि। तेज वर्ष 2021 के लिए दक्षिण सिनेमा में इंस्टाग्राम पर फोर्ब्स इंडिया के सबसे प्रभावशाली सितारों में 25वें स्थान पर रहा। वह हैदराबाद टाइम्स की 2016 की सबसे वांछनीय पुरुषों की सूची में 24वें स्थान पर रहा। तेज स्काई जोन पार्क के ब्रांड एम्बेसडर बने। वह धर्म अर्थ संगठन थिंक पीस के लिए एक राजदूत भी बने। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 2016 से वर्तमान। संयुक्ता जन्म संयुक्ता मेनन 11 सितंबर 1995 एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न 2016 से अभिनय की शुरुआत की और लिली 2018 में शीर्षक भूमिका निभाई। संयुक्ता ने कलिक एडक्कड़ बटालियन 6 और वल्लभ 2021 सहित सफल मलयालम फिल्मों में काम किया। भीमला नायक 2022 के साथ अपने तेलुगु डेब्यू के बाद उन्हें बिंबिसार 2022 में एक सब इंस्पेक्टर सर में जीव विज्ञान की शिक्षिका और वीर पक्ष 2023 दोनों में एक प्रतिशोधी महिला की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। प्रारंभिक जीवन। संयुक्ता का जन्म संयुक्ता मेनन के रूप में 11 सितंबर 1995 पलक्कड़, केरल में हुआ था। संयुक्ता ने अपनी स्कूली शिक्षा चिन्मय विद्यालय थमंगलम से की और वह अर्थशास्त्र में स्नातक है। करियर। संयुक्ता ने 2016 में
मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में साइन टॉम चाको की प्रेम रुचि अंजना की भूमिका निभाई। संयुक्ता ने 2016 में मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में शाइन टॉम चाकू की प्रेम रुचि अंजना की भूमिका निभाई। यह तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर कलोरी में थैन मोजी के रूप में दिखाई दी। उन्हें लिली में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था, जो 2018 में भारतीय मलयालम भाषा की रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी, जिसकी पटकथा और निर्देशन नवोदित अभिनेता परशोभ विजयन ने किया था। जुलाई का थ्रिल ने 2017 के अंत में घोषणा की कि यह एक रोमांटिक कॉमेडी तमिल फिल्म है। यह परियोजना 2018 में रिलीज हुई थी। उनकी अगली रिलीज थेवंडी एक मलयालम भाषा की राजनीतिक व्यंग फिल्म थी, जो पहली बार फेलिनी टीपी द्वारा निर्देशित और विनी विश्व लाल द्वारा लिखित थी। 2019 में के लिए संयुक्ता की पहली रिलीज बीसी नोफल द्वारा निर्देशित और विभिन्न जॉर्ज और विष्णु उन्नी कृष्णन द्वारा लिखित और यमनदान प्रेम कथा थी। उन्होंने यारे में टेसा के रूप में फिर से टोविनो थॉमस के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए एक छोटी भूमिका निभाई। संयुक्ता ने 2019 की एक्शन फिल्म क्लिक में शिवाजित पद्मनाथन नाभन की साइड किक की भूमिका निभाई, जिसमें प्रवीण प्रभास द्वारा निर्देशित मुख्य भूमिका में टोविनो थॉमस थे। बाद में उन्हें भीमला नायक में कास्ट किया गया, जो फरवरी 2022 में रिलीज हुई थी। अगस्त 2022 में उन्होंने फिल्म गालीपता 2 से अपनी कन्नड़ फिल्म की शुरुआत की। निजी जीवन 2023 में संयुक्ता ने अपना उपनाम मेनन अपने नाम से हटा दिया और कहा, जब मैं चारों ओर समानता, मानवता और प्रेम देखना चाहती हूँ तो एक उपनाम रखना मुझे जो चाहिए वह बहुत विरोधाभासी बनाता है। हिंदू कोरी सुनील वर्मा, जन्म 28 फरवरी 1974, जिन्हें सुनील के नाम से जाना जाता है, एक भाई भारतीय अभिनेता है जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अपनी कॉमिक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध सुनील ने अपने करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें लगभग एक को फिल्म में मुख्य भूमिका में है। उन्होंने 3 राज्य नंदी पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कार जीते हैं।
सुनील ने अंधला रामुडू 2006 में मुख्य भूमिका निभाई और बाद में मर्यादा रमन्ना 2010, पुल्लारंगाडू 2012 और तड़ाका 2013 जैसी व्यावसायिक सफलताओं सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। करियर सुनील ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में की, जब पहली बार फिल्म इकादा बाई में एक अतिरिक्त के रूप में काम किया। हालांकि सुनील के दृश्य फिल्म के अंतिम कट तक नहीं पहुंच पाए। सेकंड हेड, जिसे प्रोडक्शन से रोक दिया गया था, और पेरुदेनी सिनेमा जैसी फिल्मों के साथ उनका करियर धीमी गति से शुरू हुआ। प्रेम कथा और स्वयंवरम उद्योग में उनके पहले वास्तविक अवसर थे। चिरू नवुथो और नूवे कवाली वे पहली फिल्में थी जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। नूवे कवाली रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। 2010 में सुनील ने एस राजामौली द्वारा निर्देशित मर्यादा रमन्ना में अभिनय किया, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि सुनील अब कॉमेडी हीरो की तरह नहीं दिखेगी, उनके नृत्य शानदार हैं। वीरभद्रम चौधरी द्वारा निर्देशित पुल्लारंगडू में सुनील को मुख्य भूमिका में लिया गया था, जिसे दुनिया भर के 450 थिएटरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। वह फिल्म कलर फोटो 2020 में विरोधी थी, जिसने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। 2021 पेरुलेनी सिनेमा जैसी फिल्मों के साथ उनका करियर धीमी गति से शुरू हुआ। प्रेम कथा और स्वयंवरम उद्योग में उनके पहले वास्तविक अवसर थे। चिरू नवुथो और नूवे कवाली वह पहली फिल्में थी जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। नूवे कवाली रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। 2010 में सुनील ने एस राजामौली द्वारा निर्देशित मर्यादा रमन्ना में अभिनय किया, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि सुनील अब कॉमेडी हीरो की तरह नहीं दिखेंगे। उनके नृत्य शानदार हैं। वीरभद्रम चौधरी द्वारा निर्देशित पुल्लारंगडू में सुनील को मुख्य भूमिका में लिया गया था, जिसे दुनिया भर के 450 थिएटरों में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। वह फिल्म कलर फोटो 2020 में विरोधी थे, जिसने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। 2021 की फिल्म पुष्पा द राइज ने
सुनील को एक गंभीर गैंगस्टर मंगलम सेनु की एक असामान्य भूमिका में देखा, जो आमतौर पर उनके द्वारा निभाई जाने वाली कॉमेडी भूमिकाओं से बहुत अलग है। निजी जीवन। सुनील भारत के आंध्र प्रदेश के भीमावरम के रहने वाले हैं। सुनील ने अपना 40वां जन्मदिन एक नेक काम के लिए एक अंधे स्कूल को दान देने और उनके साथ समय बिताने के लिए मनाया। निर्देशक श्री विक्रम श्रीनिवास और सुनील भीमावरम में अपने दिनों से दोस्त थे। वह निर्देशक गुणशेखर के साथ अपने संघर्ष के दिनों में पंजगुट्टा पड़ोस में रूममेट्स के रूप में एक साथ रहे। 2016 तक विक्रम समुद्री के रूप में किराए का भुगतान करके कमरे का रखरखाव करने के लिए उन्होंने कई सहायता में प्रदर्शन किया था। है कमरे का रखरखाव और भुगतान करके कमरे किराए का भुगतान करके निर्देशक श्री विक्रम श्रीनिवास और सुनील भीमावरम में अपने दिनों से दोस्त थे। Amnesia, forgetting during sickness. Amnesia refers to loss of memory due to disease. The person may forget his past experience or may have impaired ability to encode, store, and to retrieve, making new memory difficult. Amnesia is profound memory deficit due to either the loss of what has been stored or the inability to form new memories. Amnesia are classified into two types, biological and physiological. Psychology. Biological amnesia are caused by brain malfunctions. Examples are transient global amnesia, alcohol induced amnesia, and the amnesia caused by certain disease of the brain. Transient global amnesia is a short-lived amnesia attack characterized by retrograde and anterograde amnesia. A high dose of alcohol results in amnesia for the events that occurred while drunk. In addition, heavy drinking over a period of years can produce brain damage. And pattern of systems known as the
Korsakoff syndrome, andrograde amnesia, and some loss of remote memory characterize the memory problems of this syndrome. Senile dementia and primary degenerative dementia, of which syndrome Alzheimer's disease is an example of brain disease that have amnesia as a major symptom. Psychological amnesia, childhood amnesia, it is due to difference in the ways young children and older people encode and restore information as adult. Much of our memory is encoded uh, verbally and tied into networks or schemata that are language based, but the young child without language encodes memorize in non-verbal form, perhaps storing information as image or feelings. Early childhood memories are thus said to be stored in forms no longer available to us verbally as adults. Our language dominated memories do not have retrieved cues appropriate for gaining access to the image and feeling memories of early childhood. Perhaps the memory machine is just not able to store long term memories until its maturation is essentially finished. Language ability and memory develop together because both depends on brain maturation. Repression is another explanation given for childhood and dream amnesia. Dream amnesia and dream amnesia, the difference between the symbol system in dream and in waking up makes the waking retrieval of any information encoded during dreaming difficult. Well, usually considered to be psychological, childhood and a dream amnesia have a biological basis. The immaturity of brain in childhood amnesia and the difference between these brain states in dreaming and in waking for dream amnesia. The forgetting of defensive amnesia protects the amnesic from the guilt or anxiety that can accompany intense, intolerable life situation and conflict. Man is differentiated from animals because of his ability to thinking and waking. Speaking more than 2000 years ago, Aristotle referred to man as a thinking animal. The term Homo sapiens, used by biologists, refers to human beings, means thinking or wise man. Thinking is a higher mental process which involves verbal symbols, internal, visual, and auditory images, ideas, concepts, and mathematical symbols. It takes into account past experience, future possibilities, and external realities as well, such as situations is known as problem situation. Thinking is a cognitive activity. It is a goal directed. It is problem solving behavior. It is process of mental exploration, image, concept, symbol, and language are used as instruments of thinking.
problem solving behavior. Thinking is a recognized are one aspect of thinking as a covered or hidden speech behavior. Thinking is the cognitive process that begins with the problems or work facing the person. It includes trial and error, but is affected by the readiness of person, and ultimately it's end at the solution of problem or a conclusion. The term thinking for an activity which converts essentially of a connected flow of ideas which are directed towards some end or purpose. Thinking is a behavior which is often implicit and hidden, and in which symbols, images, ideas, concepts are ordinarily employed. Nature of thinking. Thinking is the process of mentally solving the problems. It includes flow of thoughts. Thoughts continue to come one after the other, and this internal process continue till they are expressed. Attempt is made to solve the problems through trial and error method. If the problem arises, its solution is sought through thinking, or any new thought is evolved along with the analysis. Thinking also involves synthesis, foresight, and hindsight. One thinks about tangible object through intangible signs and symbols. Hence, thinking is a symbolic behavior. The main form of thinking is reason, and this is a process of mental research. Healthy thinking saves time and labor. Concrete, abstract, logical, creative, artistic thinking. Concrete thinking, it is kind of thinking which is possible only when the material related to problems is present in front of the person in some kind of forms. For example, children are taught continuing with the help of stones or beds. Similarly, if a person wants to teach uh, if a person wants to teach the working of a part of a machine, it will be possible if these parts are shown to the learner. Similarly, most of the mathematical problems are solved with continuous working on paper. Such type of thinking develops in the initial stage of development. It is primarily a mode of thinking in children. Abstract thinking, it is thinking which is possible even in the absence of any material in front of a person. It is possible with the image, concept, language. It does not require the object and situation in real form. The representatives in the form of images, concept, and language help in abstract thinking. For example, a nurse is a student is given a hypothetical problems to solve that. If some emergency develops with the patient and doctor is not available, then what she will do? Even in the absence of real situation, she can work on the problem while imagining the situation. It is abstract thinking. As the child grows to an adolescent stage, abstract thinking develops. Logical thinking.
It is also called reflective thinking. It is usually done with some reasons and logics. This logic and reasons are formed with arranging the facts and figures in a sequence. For example, person gives logic for poverty in India, that it is the result of growing population. This thinking always proceed towards a goal with the objective to solve the problem. Creative thinking, it is kind of thinking which proceed towards some novelty. Various inventions and discoveries are the product of creative thinking. It does not work under any rule and regulations or any tradition and prohibition. It is free floating with the novel kind of imaginations and ideas. It always results into some new kind of work which is original and novel in nature. Although creativity is independent from intelligence, yet creativity needs at least average intelligence. What is artistic thinking? It is internally focused, self centered thinking. It is not stimulated by the external stimulating conditions. Thinker does not respond to the external environment. It is always also considered a kind of abnormality. These individuals are inflexible in thinking and mostly introvert in nature. The source of such stimulation is usually internal. Tools and instruments of thinking. From the above discussion, it is clear that thinking requires various tools and symbols which aid in thinking process. These are explained as follows. Percept Percepts are thus stimuli and object present in the environment which stimulate the thinking and also help to find out some solution to the problem. For example, a child is presented a puzzle problem with the stones, and the child tends to solve it by playing with the stones. Stones serve as a preceptor. Similarly, a nurse, when find a patient fainting, she started checking the pulse, blood pressure, temperature of the body, etc., to find out the reason of a trouble to help the patient. Symptoms of fainting, pulse rate, blood pressure acts as percept. Thus, percepts stimulate a flow of thoughts and also help in reaching to some conclusion. Concept. These are those words or signs that represent the various characteristics of a journal group or community. The word tree represents all. Uh, thus, plants which have roots, long stem, and well separate branches with leaves. Concepts make thinking.
These concepts make thinking very easy and comfortable. Without this concept, it is very difficult to tell any incidents or happening. Absence of concept will make the thinking process filled with confusion, images. These are also very strong tool of thinking. Whenever an individual wants to think about some problem or situation, he will immediately find the images of that situation in his mind. Even thus, situations and places which an individual has never observed are transformed into arbitrary images. These images are so powerful in thinking that in the absence of situation, images are created in mind. Sometimes images are so clear and powerful that act as reality or percept. Images are not only limited to visual image, but these are auditory, olfactory, gustatory, and cutaneous in nature. For example, think about song or smell. Its image can be experienced. Symbols and signs. Powerful. In progress of thinking, these are various symbols which represent some kind of action. For example, school bell, green light in crossing, green flag for trains. These symbols not only stimulate thinking process but also tell what to do. Similarly, science and mathematics like tell how to work on given mathematical problem. The symbols and signs play important role in thinking for various activities in our daily life. Mathematical problem, thus symbols and signs play important role in thinking for various activities in our daily life. Various formulas used in science, mathematics, and other objects also facilitate thinking and understanding and solving various problems. For example, for water, the chemical composition of water is described as which tells that water is made up with two parts of hydrogen and one part of oxygen. In a statistic or to calculate average to the formula of mean indicates that when the sum total of all items is divided by the total number of items, mean will be obtained. Language, it is also a very strong tool of thinking. If some psychologists defined thinking as
subvocal speech. Then speech needs a language. Without the language, this internal speech cannot take place. During thinking on some problem, we can observe some people who talk vocally well, thinking, and in that language helps to understand, interpret, and solve the problem. Some psychologists even believe that a child starts thinking only after learning the language. Sometimes non-verbal language also act as a tool of thinking. Many times we use various body signs and symbols as a non-verbal language. For example, eye blinking, smile, showing thumb, jerking shoulders, etc. Importance of creative thinking. For nurse, nursing practice is improved by an ability to think, creativity, and use reliable problem solving methods. The nurse can practice good habits of thinking and systematic problem solving in the profession and all areas of her life, like planning her career, problems in family life, difficulties in professional and personal relationships. Daily problems solving is a major challenge for the nurse. It is important to have accurate data upon which to base reasoning or problem solving. Much of the data used by you will be gathered through your own observation and perception. Other data may be supplied through monitor, laboratory tests, and from other members of a health team. Develop the following habits. Collect as much factual information as possible. Be aware of your own prejudice as well as those of your patients. Separate fact from option, important from minor details. Search carefully for underlying physical and emotional problems. Define the problem clearly. Look for relationships between cause and effect. Do not jump to any hasty conclusions. Think about all problem solution. Listen to all solutions suggested by others. Reasoning is actually wise thinking. According to English, and English, reasoning is the proper or skilled form of thinking, irrespective of its theories of intelligence. 148. Stanford Binet test is an individual verbal test
They have oral items, the ability of individuals on concept like comprehension, reasoning, vocabulary, memory, etc. are measured by their verbal abilities. When the individual tests are given to large groups, they are called group test of verbal type. When tests use very little language and focus on what people do with their hands, they are called performance tests. This may be administered to an individual or to large group. Performance tests are useful when the person being tested cannot speak the language, is deaf or dumb, or has little educational background. Group testing is widely used when it is necessary to screen many people, such as who seek admission to college, the military, or various other kind of employment. The patient is a cooperation is necessary for the proper assessment by this test. Spearman two-factor theory or G-factor theory, according to British psychologist Charles Spearman. Intelligence consists of a general ability that works in conjunction with the special abilities fundamental to all intellectual functioning. Is the influence of G or general factor, but the presence of various special abilities is responsible for the relationships that exist between specially demonstrated abilities such as musical or athletic skill. Spearman thought that every test is composed of the G factor, which is a universal, plus a specific S factor that is found in each test alone. An arithmetic test might tap both G and S specific mathematical ability. The idea that intelligence can be largely summed up with one score is closely related to Spearman's idea that the intelligence of one general ability factor. Spearman's two-factor theory is the first attempt in the application of factor analysis is to intelligent factor analysis is the correlation technique used by researchers to discover what the elements of intelligence really are. Group factors theory of intelligence. In 1938, American psychologist Lois L. Thurstone proposed that intelligence was not one general factor but a small set of independent factors of equal importance. He called these factors primary mental abilities. To identify these abilities, Thurstone and his wife Thelma devised a set of 56 tests. They administered the battery of tests to 240 college students and analyzed the resulting test score with the new methods of factors analysis that Thurstone had advised. Thurstone identified 7 factors of intelligence, which were in
independent from each other. It means that if a person is intelligent is in any particular field, he may not be intelligent in other fields. A person intelligent in mathematics may not be in literature. Seven factors are as follow: verbal fluency, number ability, memory ability. Verbal ability, it is the ability to understand world word meaning and help a person to understand verbal thoughts, and it is utilized for verbal interaction with the others. Verbal fluency, it is the speed with the verbal material, is making rhythms. It facilitates the thinking related to verbal material. It is a arithmetic ability that helps in working on simple mathematical applications like addition, subtraction, division, and multiplication. The ability to remember words, letters, numbers, and images. It helps to retain the store and learnt material and to retrieve when it is required. Perceptual speed, the ability to quickly discuss visual, detailed, and perceive similarities and difference between remember words, letters, numbers, and images. It helps to retain, store the learned material and to retrieve when it is required. Perceptual speed, the ability to quickly visual details and perceive similarities and difference between pictures. Object reasoning ability, this ability helps to abstract relationships between the things and then utilize it. This ability also held the previous experience to utilize in solving present and future problems. Spatial ability, it is the ability to mentally visualize and manipulate objects in these dimensions. Later, research on reasoning ability discovered two types of reasoning abilities called inductive reasoning and deductive reasoning. So sometimes it is mentioned that Thurstone gave 9 group factor including inductive and deductive reasoning. Inductive reasoning is derives original ideas and rules from specific speed of information. Deductive reasoning, it derives specific ideas from general information. Multi-factor theories, Thurstone found that general intelligence code could be broken down into 7 primary abilities. Javan Gulford expanded the concept of multiple components in intelligence. He described human activities in terms of 3 basic categories of mental abilities: operations, contents, and products. Gulford has
proposed three-dimensional theories of intelligence represented by a cubical model. The model provides for 120 factors of intelligence or primary abilities, which is a combination yield of four contents, 5 operational, and 6 products, according to Guilford. There are three types of thinking abilities. Cognition deals with the discovering and recognizing information. Production reflects the use of known information. Productive ability may be other convergent, leading towards a single correct answer, or divergent, taking a number of directions. Any one or more may be right. Evaluation, the ability used in determining the adequacy and correctness of cognition. And production, to measure memory, there are numerous rote memory tests, such as learning test of nonsense symbols, syllabus, paired associates, etc. Test of cognition may include such tests are rearranging scrambled letters to form word. To the families words y center, the content is symbolic, since the test involve a set of letter symbols. The operational is cognition, as it requires recognition of information, and the product unit is word. Guilford's three-dimensional model of intelligence has helped us to bring out tests that include terms in which more than one answer could be correct. It has also given demonstration of creative thinking, intelligence IQ. William Stein, the German psychologist, introduced the concept of IQ is obtained when the mental age. It is divided by the chronological age, which is actual age of the person in years, and multiplied by 100 to avoid decimals. Imagine 10 years old child score mental age of 12. His IQ will be IQ MA 12 by 10, 100, 120. If a 12 years old child scores a mental age of 12, two children both obtain an MA of 5 years, but one child is 4-year old and the other is 6. So child 1 bright child has an IQ of any person will reach a maximum IQ at about 18 years, depending upon conditions such as
higher education and challenging learning. Learning experience IQ may be increase slightly till age 30. After 30, IQ does not change except that it decreases slightly with old age. There is no difference between IQ of men and women. When children grow into adults, the CA will constantly increase, but MA will change very little for formula. IQ will become lower and lower for a person growing older and older. The results of IQ test for adults are compared with the test results of other adults of the same age and not with same person's chronological age. This is called the deviation IQ. Development of intelligence and determinant. Just like intelligence, there is no common opinion of a psychologist about the development of intelligence. Some considers it is to be hereditary, while some others believe that it is mental ability that is developed as an uh, interaction between the environment and the hereditary factors. No one can be categorized as intelligence test on him. Hereditary environment, certain other environment have an important role in the development of intelligent behavior. Some of these are discussed here. Hereditary intelligence is deeply related with the hereditary because the child inherits a number of characters from his parents through chromosomes. Environment intellect cannot develop to its full capacity if the proper environment is not available. Race high levels of intelligence have been found in some races. Sex. Some studies indicate that boys are more intelligent, while some others have found that girls have better mental ability in some areas. It is controversial issue. Birth order and date of birth. Studies have shown that first child is comparatively more intelligent. Similarly, people born in some specific month are more intelligent, though there is no firm reason and conclusion available about this point. Size of family. The level of children intelligence decrease with the increase in the size of family. This happens because of lack of facilities, attention, and love. Premature child. There is no common opinion about the intelligence of these children who are born before time. Some believe that these children are less intelligent, when well, some others consider them to be more intelligent. The other group believe that the brain of child has fully developed much before the competition of 9 months of pregnancy. Healthy mind resides in healthy body. In other words, there is a higher possibilities that a healthy child will be more
intelligent than the one with poor health. Intelligence at the nurse. Knowledge of intellectual functioning is useful to a student nurse and later for her as a teacher. Methods of psychology. Like every scientist subject, psychology too has its own tools and methods of studying problems. The following are the methods: observational or systematic. The observational or systematic observation. This method is also known as method of objective observation because in this method the object to be studied is kept under a constant observation either by a second person or by object itself. The behavior pattern changes or effect are collected in the form of data and conclusions are drawn. The nurse make the use of this method when a patient is admitted under her supervision. She keeps observation on her observational systematic observation. This method is also known as method of objective observation because in this method the object to be studied is kept under constant observation either by second person or by object itself. The behavior pattern changes or effects are collected in the form of data and conclusions are drawn. The nurse makes the use of this method when a patient is admitted under her supervision. She keeps observation on her patient and notes of his behavior, such as restlessness, sleeplessness, temperature, facial expression, etc. This method is used in studying the behavior of children and animals. It must be noted that in this method we do not make the attempts to control the conditions under which behavior is observed. They are observed under natural settings. In order to make accurate and correct observation, it is necessary to adopt objective attitude, that is, observer has to think role of object. Our findings have to be compared with the other findings. We should not jump to immediate our findings have to be compared with other findings. We should not jump to immediate conclusion. Observe
Observation is an art. The person should not know that she is being observed. It can be learned through careful studies and practice. It should be free, bias, and prejudice. The introspection or self observation method, also known as introspective method or self observation method, it is one of the older method of study. It means looking within one's own self. For example, when a patient recovers from an illness, he is asked what he feels. He will think within himself about his past feelings and present state and reply. Thus, in introspection, the person observer analyzes and reports his own feelings. This method has certain advantage and disadvantage. The advantage are it entail no expense laboratory techniques. The disadvantage are that whatever data we get not fully satisfactory, we can't keep into the mind of an object. Thus, it is difficult to interpret patient's feelings and what the observer expects. These methods cannot be used on children, animals, and mentally affected persons. Experimental method. In this method, made popular by Wandit, the psychologist studies under controlled conditions the effects of a dependent variable of changes in independent variable. Many experiments are being conducted on people and animals dealing with learning, forgetting, and many other mental activities. Tremendous progress of psychology during the 20th century is mainly due to this method. For example, the famous Hawthorne experiment conducted in a Western Electric Company USA by Alton Mayo to find out in that circumstance production could be improved. Five girls participated one by one. Factory conditions were altered: elimination, sitting arrangements, rest, pause, etc. The experimental method controls are variables. Examples are the effect of noise on study, effect of a drug on sleep. The advantage of this method is that experiment can be repeated and results confirmed. It is highly objective. Limitations are that it cannot always be used, especially if the experiment might be dangerous to the subject and obtained in artificial situations. The clinical and case study. This method is used by clinical professional or psychiatrists, social workers, and clinical psychologists in child guidance clinics, mental hygiene clinics, and allied institutions. This method is used on parents who are affected with the mental disorders like worries, fear, anxieties, obsessions, vacations, social and personal maladjustments. This method is used to find the underlying cause for these problems. When parents come with the child
who does not concrete on his daily routine or study. The child is then taken for study to find underlying cause. The methods employed are cause work of parents, friends, school, teachers, neighbors, relatives with who this subject comes in frequent contact. Home visit, school visit, workplace visit are made to find the experimental conditions, past health, history, incidents, incidents, accidents, etc. are also collected. Different psychological tests are carried on. Great deal of data are collected from infancy to date during development stage to get the clue. In this method, only one subject is taken at a time. Rating scale, checklist, questionnaires. This method are used separately or together on the subject to be studied. In a rating method, the individual is given a place on the scale or score, which indicates the degrees in which a person processes a given behavior. For example, in order to find the personality type of person is given list of questions with the scales and scores. The scores are graded good, fair, poor. The checklist also consists of similar part of questions which consist of traits or behavior pattern. This may determine normal or abnormal growth, behavior, etc. This is mostly used for child study. Questionnaires are big list of questions with the yes, no, not known type. Sometimes questions are open, that is a subject can give lengthy answers. Genetic or development method. This method is useful in studying the complicated on chronic case. In this method, the data is collected from infancy. Menu inquiry is made, no loop holes are left. This method gives us clue to different factors, social, economical, religious, affecting the behavior pattern of individual and molding personality. For example, while studying the delinquent, the factor responsible for making his delinquent are studied, thereby finding the clue to make him on a normal behavior. The testing method. It is mainly used in finding the personality clue in mental hygiene clinics. It consists of carefully designed and standardized tests for measuring aptitudes, interest, intelligence, achievements, and other personality traits. First, these methods are used in the experiment stage, and then after proving its validity is used on large scale for measuring intelligence of a person. This method is used. Different tests have been
devised for different age groups and different occupations and country to country. Nowadays, it has been a rule to different tests for admission to schools and professional courses. This is so to maintain the high standard of the institution. Only certain candidates securing high score are eligible for admission, and so on. Therefore, in modern days, there are no limitations for use of this psychological tests, which are also given the name aptitude test. Relation of psychological to other fields of study. There are science, many other science that deal with the human life and family behavior. It is desirable to understand the relationship that exists between this science and psychology. They all make a contribution to nursing and in other to do their year work. But as a nurse, you need to study both biological and social science. Psychology and biological science 10, 5, 6, 7, 8, 18. Biology, anatomy, physiology study human organisms, their growth, structure, and function. These studies throw light on their behavior and are closely related to the study of mental functions such as memory, intelligence, perception, and emotions. What to do? Learn about the brain, the nervous system, and physiological process will be of use of your study of psychology, philosophy, and physiology, psychology. If the history of psychology is traced, its roots will be found in the philosophy. Almost all the sciences have their origin in philosophy and same in true of psychology. Earlier attempts to understand the nature of a human were made by eminent philosophers of that time. Even the term psychology is given by philosopher Aristotle. Later on, the psychology became independent from philosophy. Now, psychology is a science and established itself as a complete subject. Its mental methods of study are different from philosophy. However, still some sort of relationship is there. Philosophy studies the style of life and psychology deals with how this style can be achieved. Various facts which philosophy tends to search are based on psychology. So, relationship is there between philosophy and psychology. Sociology and psychology. Sociology studies the society and relationship between members of the society. It studies the social organization, institutes, the origin and development of society, culture, traditions, and group behavior. However, psychology studies the behavior of individual. It is a view like this that society is formed by a number of individuals, then relationship between teams get easily visible.
Sociology and psychology both are positive science. Both are based on facts. Both are use scientific methods of used study. A relationship is so close that a independent branch of psychology is developed called social psychology, which deals with the study of behavior within society. Both help each other in understanding and explaining the findings of each other. Unit of study in sociology is a society, whereas in social psychology studies leadership, public opinion, socialization, group formation, etc., which are linked with the study of topics of sociology. Method of study may differ, but the results provide information to both subjects. Psychology and psychiatry. Psychiatry is the branch of medical science that deals with the mental problems of a patient. It studies the clinical picture, cause, and treatments of the mental problems like psychosis, neurosis, drug addiction, and others. Similarly, in psychology, there is a specialized branch called abnormal psychology, which also deals with the mental problems of abnormal. It also studies clinical picture, cause, and therapeutic approach of treatment. Although the focus of psychiatry is more organic and that of psychology is behavioral, but the diagnosis and treatment cannot be successfully achieved without the inner application of both streams. Medical treatment, along with the behavioral treatment, helps the patient to come out of their troubles successfully. Both helps each other in working together. Nursing and psychology. Nursing is a great service to humanity. Nursing is, in general, the process of caring for, nurturing another individual. More especially, nursing refers to the functions and duties carried out by persons who have had formal education and training in art and science of nursing. Professional nurse combine many different disciplines, including aspects of biology and psychology, to promote the restoration and maintenance of health in their clients. Then, in performing the duties of nursing profession, it is very essential for a nurse to be for more skillful in treatment and handling of the patient. When a nurse interacts with the patient, she is not just deceased or sick person who is suffering because of some physiological or medical health trouble, but is complete human being with feelings, emotions, thoughts, intelligence, personality, patterns, etc. A nurse has to deal with the patient by keeping these things in mind. So, nurse has to learn psychology to understand human aspects of a person. Thus, there is close relationship between nursing and psychology. It will help the nurse through various perspectives. It will enable her to understand herself. This implies an understanding of her motives, desires, emotions, ambitions. She will realize how her personality is highly individualistic and complex, how she thinks, feels, and reasons,
how she arrives at decisions in her life and how she learns solve the problems. In other words, she will understand the basic mental process which lie behind behavior. For example, why has she chosen to be a nurse? Psychology will help her to understand how several factors have influenced her choice, her own ambitions and ideals, her desires to work with and for other people, the reactions to her family, the attitude of her teacher towards this profession, the need for economic self sufficiency. Again, psychology will help her to assess her abilities, limitations, and weakness, and her reaction to other various situations. The insight into her own behavior and what lies behind it, it will enable her to control situations and at, attain self discipline. Psychology will help a student nurse in understanding other problem. She has to work, study, and live with other nurse, doctor, patients, and their families occupied with the scientific knowledge of human nature. She will be in a position to understand them better and thus achieve greater success in international relationships. She will learn why others differ from her in their likes and dislikes, interests and abilities, or in their reactions to others. She will realize how difference in behavior are due to some extent to difference in customs and beliefs are cultural patterns of the groups in which she belongs or to the